Hi Kirti, how are you? Yeah, I'm good. What about you? No, I'm great. First things first, you're from Haryana, but you have lived your life in Delhi. Yeah. That's what I know before we spoke for 5 to 10 minutes before. Yeah. So you told that Delhi is not that great place in terms of women's safety. Yeah. Why? See, there have been many incidents that happened in the past. So, like, girls are not safe. We can't go out after 9 p.m. After, not 9. In fact, in my area, it's not after 8:30. So if we are working in Delhi, so like everywhere is like that. सब इस तरीके का ही है. तो सारी की सारी कंपनीज नोएडा में है, गुड़गांव में है. सो मेन दिल्ली में कुछ भी नहीं है. सो अगर हम दूर वर्क कर रहे हैं एंड शिफ्ट इज योर 10 to 7 और 9 to 7, देन इट विल टेक 3 hours to come back. So and in my area, that after 8 p.m. you can't even like go out. So like it is not at all safe for girls. So there are many people like that. So Correct. like you can understand. So I don't think so. I remember a Nirbhaya case in 2012, which was like a very big thing. How were you back then? How old were you? I was, I guess, 12 years, maybe 12, 13 years. And did you know back then ऐसा कुछ हो रहा है, हुआ है? Yeah, I know. And how was the situation back then in India? I mean in Delhi. वहाँ पे तो मतलब बहुत प्रोटेस्ट हुआ था. सो दिस केस वाज वन ऑफ द वेरी फेमस या वेरी पॉपुलर केस. Famous for all the wrong reasons. Yeah. So after that, the Delhi became like the crime city, you can say. Right. So it is not safe. It is moreover a crime city. So अगर आप घर के बाहर भी जा रहे हो, then you can't take out your phone. क्योंकि कोई भी आके आपका फोन छीन के लेके जा सकता है. So it's been like that. Just outside, if you like step out from your house, so it will happen Do you everywhere. think it is still the same, or do you think it's at least safer It's still now? the same. It's still the same. अभी भी मैं अगर दिल्ली जाती हूँ तो I can't feel safe because of all these things. So अपने सामान को बहुत ध्यान से रखना होता है. अदरवाइज ये वो बोलते रहे कि नजर हटी दुर्घटना घटी, वो वाला है दिल्ली में ऑल ओवर द प्लेस. क्या करेंगे? Like what do you think? What can be done to actually change this kind of scenario in Delhi? This can be changed if the government will be changed because वो क्योंकि सब कुछ उनके ऊपर है, वो ध्यान नहीं दे रही है. अभी वुमेन की सेफ्टी के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कुछ किया होगा कि ऐसे कितने सारे केसेस आ रहे हैं, बट व्हाट आर दे डूइंग? नथिंग. सो आई गेस विमेन, हम लोग तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रख रहे हैं, बट अगर कुछ हो जाता है लाइक क्योंकि हर बार सिचुएशन सेम नहीं होती है, राइट? तो अगर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी, अगर कुछ हो गया तो उनको सिर्फ अरेस्ट होते हैं एंड आफ्टर 1 to 2 months के बाद वो लोग वापस छूट जाते हैं, राइट? सो दिस इज द सिनेरियो इन द दिल्ली राइट नाउ. सो अगर गवर्नमेंट कुछ करेगी, अगर गवर्नमेंट लॉज चेंज करेगी, then we can only say that it will be safe. Otherwise, I don't think so that it's gonna be safe for women. You know, one thing about crimes is that we do take measures, but we don't take drastic measures until something happens. There is a difference between measure and drastic measure. वो भी हुआ, निर्भया वाला हुआ, बट व्हाट हैपेंड? केस 10 years तक चला, 10-12 years तक चला, एंड 12 years के बाद जाके उसको ये न्याय मिला था. बट व्हाट अबाउट दीज 10 years that उनके पेरेंट्स ने सफर किया इतना? Right. तो दैट्स नॉट द थिंग. आई डोंट थिंक सो कि उनको छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा. Right. अदरवाइज दिस इज गोना बी लाइक फॉरएवर. Right. No, I think through this podcast, I'm sure people would listen to it, and I'll also put in a word for their कुछ change करने के लिए. But it is actually a valid point. I'm really happy that we started off with this. Yeah. I think it's better to actually understand this perspective from a woman. Yeah. Right? Especially a woman from Delhi, because you would know more the ground reality than what I would know, and than what would our viewers know. Yeah, this is the main reason that I shifted from Delhi to Hyderabad. So one of the main issue is this only. So it's just not about career, it's just not about like nothing. So it's just about the safety. So Delhi में if I started my career in Delhi, then I don't think so कि I will be much more ये इतना मतलब career में इतना आगे जा पाती. Right. So I guess you would have your own limitations. खुद को limit करना पड़ेगा. Yeah. So यहाँ पे like once you step out from the box now, once you step out from your boundaries, then you will realize your like आप कितने काबिल हो your किस चीज़ में. abilities. You get to explore yourself, which otherwise you wouldn't if at all you were in Delhi. Yeah.
exactly. Right. Understood. Great. No, I'm sure, and I think in Hyderabad also the crime rates, of course, they're very less. They are very less from the Delhi. Right. Exactly. Yeah. There are there, but Yeah. पूरे इंडिया में like crimes are there, like from all over the country, but Delhi is the most one of the like the above बोलते हैं ना first पे बिल्कुल top, one of the topmost city in the crime. So, no, बहुत it's actually very sad because Delhi is the capital of the country. Yeah. and इसीलिए लोग दिल्ली में शिफ्ट करते हैं, but they don't know about the harsh reality about it. Because safety is the like top priority होनी चाहिए. और जब safety ही नहीं है capital city में, then what will you do correct with your career? Wow. Well, that's it. I want to understand about your childhood now because you lived in Delhi. Yeah. I want to understand how were you. I'm sure you were not like this. You should have been little naughty or little silent. Yeah. I should understand that. So, how were you as a kid? Yeah, I was very crying baby. Cry baby or crying baby? Both. Okay, both. Okay. तो I was very naughty also. मैं बहुत जिद्दी टाइप की भी थी, stubborn अभी टाइप कैसे का. अभी मैं जिद्दी तो नहीं हूँ. Okay. जिद्दी नहीं हूँ, इतनी नहीं हूँ. और like if I wanted to do something, ना I'll do it. Wow. That type of attitude I have only. So right now अभी तो जब बचपन में थे तब तो it was like कि ठीक है पापा ने नहीं दिया, it's okay, थोड़ी देर आप रो लो धो लो, थोड़े कुछ दिनों बाद मिल जाएगा. But अभी if you want to get it, then you have to get it by yourself. Okay. No one is gonna like आपको देने नहीं वाला. तो it's like that. School में कैसे? स्कूल में I was a bright student. Okay. Yeah, तो 6 to 10 तक मेरी एक जगह पे स्कूलिंग हुई थी. So I was, and when I shifted in like a different school, so in 11th and 12th, so I was a topper in physics. So physics. You आप पापा के फेवरेट हो या मम्मा के? पापा. पापा के फेवरेट हो. Understood. Okay. Yeah, एक इंसिडेंट हुआ था जब हम छोटे थे तो मेरे को ना पैर में फ्रैक्चर आ गया था. Okay. So that happened. गिर गए थे. Yeah. So मेरे पैर की जो बोन होती है ना वो टूट गई थी. Like उसके 2-3 कुछ tendons, ligaments, tendons. मतलब बोन ब्रेक हो गई थी. Okay. उसके 2-3 पार्ट में. Okay. सो उस टाइम पे ना प्लास्टर चढ़ा था. तो व्हाट हैपेंड इज कि मेरे जो कजन्स थे ना और मेरी जो सिस्टर थी वो लोग ना बहुत प्रवोक करते थे. तो वो बेड से कूदते थे जानबूझ के. उनको पता है कि मेरे को प्लास्टर चढ़ा हुआ है. जॉइंट फैमिली था आपका? या ओके. तो उनको पता है कि मेरे को प्लास्टर चढ़ा हुआ था, बट स्टिल मेरे को दिखाने के लिए कि हम खेल रहे हैं तुम ऐसे लेटी हुई हो, तो वो बेड से कूद जाते थे और मेरे को प्लास्टर चढ़ा हुआ था. बट स्टिल मैंने उन्होंने मुझे प्रवोक किया और मैं हो गई और मैं बेड से कूद गई विद प्लास्टर. लाइक फुल लाइक में पूरा प्लास्टर था और मैं उससे कूद गई और फिर प्लास्टर टूट गया. और सेम थिंग हैपेंड 3 times. ओके. सो दर्द नहीं हो रहा था आपको? और मैं छोटी थी ना उस टाइम पे, तो इतना कुछ पता नहीं था कि दर्द हो रहा नहीं हो रहा है. मैं बस आपका ये एपिसोड का नाम होगा आयरन विमेन, क्योंकि आप कूद रहे हो, आपको दर्द नहीं हो रहा है. तो लाइक दिस लिटरली हैपेंड 3 to 4 times एंड डॉक्टर वाज लाइक ये कैसा बच्चा है आपका, इतना मतलब क्या बेड से कूद जाता है. तो डॉक्टर ने 3rd टाइम पे बोला मैं इसको प्लास्टर नहीं चढ़ाऊंगा. 1 महीने में दूसरी बार प्लास्टर टूट रहा है और 2nd मंथ में फिर एक बार टूटा, अगले महीने में फिर एक बार टूटा. तो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास. फिर डॉक्टर को मेरा नाम अभी तक याद है कि अच्छा ये वही वाली बच्ची है जो वो बेड से कूद जाती थी प्लास्टर के टाइम पे. तो आई वाज अ वेरी घर में डांटते नहीं थे आपको? मेरे तो घर से निकाल देते थे. बहुत डांटते थे, बहुत ज्यादा डांटते थे. लाइक यू कांट इवन इमेजिन बिकॉज मैं सबसे छोटी थी. मार पड़ते थे? नहीं वो इतना नहीं हुआ. अच्छा. बट मेरे से मुझे पूछो, बहुत मार खाया मैंने. आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ ऐसा गुड बॉय टॉकिंग टू यू, मार के वजह से. ओके कुछ होता है इंसिडेंट्स. अभी मेरे लिए मेरे को डांट बहुत ज़्यादा पड़ती थी. तो मैं सबसे छोटी थी घर में, तो प्यार भी उतना मिला लेकिन डांट भी उससे ज़्यादा मिली क्योंकि पापा प्यार करते थे. मैं ना ट्रॉमेटाइज हो रहा हूँ. अब बोल रहे हो प्यार मिला हुआ है, मुझे नहीं मिला. मैं घर में जाके प्रोटेस्ट करूंगा. ज़्यादा पापा से मिला, मम्मी से सिर्फ डांट मिली बहुत. मतलब ऐसा नहीं कि पेरेंट्स हमारे मम्मी का डांट नहीं लगता है ना, वैसे भी लगता है. मेरे को तो बहुत लगता था. मैं रोज नहीं मतलब डांटते हैं, लगता है डांट, बट लगता है क्या डांट है वो? मैं तो मजे में ही लेता हूँ आधा. पहले मैं बहुत सीरियस लेती थी. अभी बोलते थे तो अभी मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हूँ. अभी आई एम लाइक डांट. तो अभी वाली डांट इतनी नहीं लगती क्योंकि जितनी डांट का असर होना था वो हो गया 12th तक. उसके बाद तो बस अभी फोकस इज ऑन बिल्डिंग करियर. सो दैट इज. I've seen your Instagram and you love your father.
Yeah. I did not see your mother's post, but I've seen your mother's picture, mother's and father's anniversary, I guess. Yeah. Right. So tell me about this, the relationship that you share with your parents. Yeah, so the relationship with my parents is like quite amazing. My dad supports me in everything, every small thing he supports me. So मेरे घर में अगर मुझे किसी से ज़्यादा बात होती है ना, वो सिर्फ पापा है. मेरे जैसे मैं यहाँ रहती हूँ तो आपके सिबलिंग्स में है ना? Okay. हाँ. So अगर मेरे घर में बात हुई मुझे 30 days 15 days हो जाते हैं, बट ऐसा एक भी दिन नहीं है कि जिस दिन मैं पापा को कॉल नहीं करती. सो इट्स डेली हमारा रूटीन बन गया है ऑफिस से घर आज जाना. आप ये कॉल करके बताओगे ना, एक बच्चा है वो सोचा है ऐसा, गाली दोगे मिलके. ओके. तो लाइक हमारा एक ही रूटीन रहता है कि मैं ऑफिस से, पापा ऑफिस से आते हैं, मैं ऑफिस से आती हूँ, उसके बाद खाना वाना खा के ही विल कॉल मी और आई विल कॉल हिम. तो हम लोग जैसे बात करेंगे आधा घंटा या 15 मिनट, इट्स डिपेंड ऑन द टाइम कि उनके पास टाइम है या मेरे पास टाइम है. तो 15 मिनट तो लाइक मिनिमम हमको बात करनी ही है. तो 15 मिनट के बाद वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग, ही विल शेयर एवरीथिंग कि क्या किया आज, क्या नहीं किया, आगे क्या प्लान है, क्या करना है. सो लाइक पापा के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है. इतनी मेरे और फैमिली मेंबर में किसी के साथ नहीं है. सो पापा के साथ. एंड माय फादर इज बीन लिविंग इन UAE सिंस 12 years. ओके. या कंफ्यूजन. सो इट्स बीन 12 years कि वो वहीं पर है. तो हमारी तो उनकी भी घर पे बात कम होती है, मेरी भी कम होती है. तो इसलिए हम लोग आपस में ही बात करते हैं कि क्या हुआ, घर पे बात हुई नहीं हुई. तो गॉसिप्स, डेली वाली गॉसिप्स, तो वो सब मेरे पापा के साथ ही होती है. सो ही इज लाइक माई बेस्ट बडी. राइट. अमेजिंग. Perfect. चलो बहुत हो गया. We spoke about you, about your childhood, and then about your parents. Now I want to understand the career that you have chosen so far. Okay. पहली बात तो you are a author. Yeah. You write. You also recite poems. You Yeah. write your shairis. Yeah. But apart from all these things, your profession, that Okay. is, you are a astrophotographer as well as a physicist. As well as a writer. As well as a writer. Oh yeah. You write for Chhota Bheem. Yeah. How could I forget? Ladies and gentlemen, she writes for Chhota Bheem and I am a fan of Chhota Bheem. आप मुझे बस ये बताइए, आप किसके साथ शादी करवा रहे हो छोटा भीम का? खुशी के साथ या इंदुमती के साथ? ये बचपन से है मेरा क्वेश्चन, बिकॉज यू आर द राइटर. आई वांट टू आस्क, ऐसा कोई प्लान से लाइक राइटर लोग, आप लोग बैठ के बात करते हो किसके साथ शादी करना है, कराना नहीं, वो सब तो बच्चे हैं ना. तो बच्चे दे आर जस्ट लाइक अ फ्रेंड्स. ओके. या सो ही इज नॉट गोना मैरी. ऐसा डिड यू एवर थॉट ऑफ कि लेट्स मेक अ मूवी wherein we are going to show their future? ऐसा कुछ है? No. Never? Never. Okay. So these are all speculations. Yeah. So it will never happen. No. Okay. They are just friends na. Like we have friends in village, we have friends in like classmates, our best neighbor friends. So they are all like that. They're best buddies. Right. So you're a full-time writer as of now for Chhota Bheem? Yeah. I'm a full-time creative writer. Wow. Yeah. I write for Chhota Bheem. नए एपिसोड्स आ रहे हैं अभी भी? सीरीज आ रही है, एपिसोड सब आ रहे हैं. मूवीज. या. वाओ. टेल मी द प्रोसेस. कैसे लिखते हो आप? Okay, so if we talk about the writing and creative writing, so if you want to write a script, so first it will start with the concept. Okay, first you have to build the story in your mind. So what it could be, how we can proceed. So first of all, the fantasy theory that should be strong. So once you write the log line, like the one line, and you take the approval for the log line, and if the channel. What is log line? Log line is a one liner. The title? The title ki what is this story about? Okay. Right. So uske baad you have to work on the building the story. So once the like story will be about like 1 page, or it depends on if it's a 11-minute episode or a 24-minute or a 44-minute movie. So it depends on the आपके timeline के ऊपर. So you have to build the story. So once you take the approval for the story, then you have to write the script accordingly. Wow. Yeah. Have you wrote for 11 minutes or 22 minutes or 40? I have written 7 minutes. I have written 5 minutes. I have written 3-4 minutes story. Yeah. So recently, I guess आपने सुना होगा छोटा भी मतलब कर्स ऑफ दमयंती मूवी आ रही है. Right. Yeah. So मैं जा रहा हूँ. मैं प्ले हाउस जा रहा हूँ ये मूवी देखने. Okay. Yeah, this is the first live action movie. Yeah, so अभी उसके लिए I have been writing the marketing scripts.
for the Chota Bheem and the Curse of Damayan ke liye. So 3 minutes, 4 minutes scripts I'm writing for the YouTube, for the social media, all these things. And recently अभी महा होली सेलिब्रेशन का एपिसोड रिलीज हुआ था, if you've seen. So वो एपिसोड मैंने ही लिखा था, first 3-4 minutes का. So I did screenplay, I did writing there. In this episode. So in 15 days the views crossed 2.2 million views. Wow. In just 15 days. Wow. So you're the star writer of Chota Bheem as of now? No, we have lots of writer who writes na. So I'm particularly So कैसा होता है, like you have, I mean the team, I mean there would be a particular team. Yeah. And then how does this script get selected? Yeah, it does. See, we have. See, it's all creative, right? For you, your script would feel like, yeah, this is the best. This is the best, Right. yeah. For Then it others goes to then it goes to the channel. Okay. Like we have Pogo channel, na? So it just goes to channel, and channel will, because they have to telecast it, right? Right. So they'll read the script, they'll give the feedback if there's anything to change, and if there's anything to change, we will change the things according to them, and then we will give the final script. Okay. So then it will go to the pre-production department, and then all the things happen. Then animation, first storyboard happens, then animation, like background color, like animation, and all. So right, and then finally. Final animatic we will see, and then. Understood. So what is the process how you write? Like you took a line, I understand that. But उसके बाद जो story है, like how do you write them? Like do you get inspired by your day-to-day, things, or you see something and then you write out of it? आप लिखते कैसे हो? How do you get all those imaginations? Yeah, actually it depends on you, because हमको अपने mind से ही सब कुछ सोचना पड़ता है कि उसके लिए बहुत रिसर्च लगती है, और बहुत रिसर्च. अब अगर आप जितने भी रिसर्च करोगे, आप कुछ एपिसोड्स देख रहे हो और किसी चीज़ का एपिसोड देख रहे हो, देन यू विल गेट दी आइडियाज इफ यू सी द थिंग्स, राइट? तो वहाँ से आइडियाज लेते हैं कि ये ऐसे नहीं, इस तरीके से हो सकता है, स्टोरी में ये आ सकता है, और किड्स के तरीके से कैसे कर सकते हैं. सबसे मेन जो पॉइंट होगा, you have to look from the perspective ऑफ किड्स, या बिकॉज उनको अच्छा लगना चाहिए. अब एडल्ट के हिसाब से तो अब एडल्ट एंड किड में बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? सो एडल्ट का जो माइंड है वो ऑलरेडी इवॉल्व होता है, किड का माइंड अभी वो सिर्फ उसी जोन में रहता है. तो हमको उस तरीके से बनाना होता है कि किड कैन अंडरस्टैंड कि एक किड को अच्छा लगना चाहिए, उसमें कॉमेडी होनी चाहिए, उसमें एक्शन सीन, अगर उनको एक्शन सीन अच्छा लगता है तो उसमें एक्शन सीन इतना डालना चाहिए, इतना नहीं डालना चाहिए. तो लाइक दैट. बिकॉज अगर हम एडल्ट का अगर हम उनका ओपिनियन लेंगे तो दे विल बी लाइक कि इसमें ज़्यादातर ये डालो वो डालो, बट उनको नहीं देखनी है ना, क्योंकि अगर हम एक बार बड़े हो जाते हैं तो हम नहीं देखते हैं. लाइक वो बात अलग है कि वी आर स्टिल यूज्ड टू वॉच अदर कार्टून्स लाइक शिनचैन, डोरेमोन, छोटा भीम. सो एक जो बच्चा होता है उनका माइंड सिर्फ एक ही जोन में रहता है उस टाइम पे, बट दे आर सो क्रिएटिव. वो एक चीज़ को वो किसी भी तरीके से आपको बता सकता है. सो हमको उनके ओपिनियन के हिसाब से हमको अपनी स्क्रिप्ट डिजाइन करनी होती है. सो दिस इज द मेन टास्क, कि किड को हैप्पी कैसे रखना है. सो इट्स ऑल अबाउट. आप ये स्टार्ट कैसे हुआ आपका ये जर्नी, दिस राइटर जर्नी? राइटर जर्नी, ओके. सो राइटर जर्नी इट स्टार्ट्स लाइक प्रोफेशनल जर्नी. इट स्टार्ट्स आई गेस 2022 में मैंने स्टार्ट किया था. सो आई वाज अ राइटर इन IT फील्ड. So IT फील्ड के बाद then I switched to other company. So वहाँ पे भी मैं राइटर थी. Then I got a call from Green Gold Animation. Wow. So then I got a call, and then the process started, interview process, and then I joined. right. So do you remember assessment में जो assignment वगैरह होता है इंटरव्यू के टाइम पे, did they ask you to write a story? असाइनमेंट में स्टोरी नहीं था, बट और बहुत सारी चीज़ें थी. लाइक आई गेस काफ़ी बड़ा असाइनमेंट था. तो वो सारी चीज़ें मेरे को लिखनी थी, लाइक आइडियाज़, कॉन्सेप्ट आइडियाज़. करेक्ट. सो और तब तो AI भी नहीं था. आजकल तो सब AI आप तो है. हाँ, उस टाइम पे तो लाइक लास्ट ईयर भी AI था, बट मेरे को नहीं पता था. वो बात था क्योंकि मैं IT फील्ड में थी. IT फील्ड में तो आप उसमें हम लोग AI का यूज़ नहीं कर सकते उस चीज़ में. तो मेरा उस टाइम में मेरे को नहीं पता था कि ChatGPT नाम की कोई चीज़ होती है, लिटरली. तो उसके बाद फिर वहाँ से मैंने असाइनमेंट सबमिट किया, एंड देन आई गॉट अगेन कॉल फ्रॉम द HR, एंड देन द like face-to-face interview happened, and then like the straightforward thing. Right. तो मुझे आप ये बताइए, I understand आप writer बने, but then the point is right now AI आ रहा है, and it would not even take like 10 to 15 minutes to actually write scripts now at the same time using AI. So as a writer, how do you see this AI as?
Do you think writer AI cannot take over the writer's place because writer have to think from the kids perspective, which technology cannot. So अगर हम टेक्नोलॉजी को बोलेंगे कि तुमको किड्स पर्सपेक्टिव से करना है तो ही डोंट हैव इमोशन ना. कोई भी टेक्नोलॉजी है उनके पास ना इमोशंस है, उनके पास ना ही माइंड है. दे कैन जस्ट क्रिएट, दे कैन जस्ट हमको वही मतलब वही चीजें दे सकते हैं जो उनमें फीड किया गया है. राइट. तो आई डोंट थिंक सो कि So there's no threat, right? Yeah, there's no threat. Yeah. Perfect. And how's the journey so far? कैसा है with छोटा भीम? How's everything? Yeah, it is सपने में भी quite छोटा भीम आता होगा अब तो? No. इतने लिख no? नहीं, सपने में like मेरे को ड्रीम्स ही नहीं आते इतने. It's very rare. Dreams नहीं आते? नहीं, it's very rare. So yeah, so. Do you remember your dreams at least? Rare आता है ना कभी कभी. Do you remember? No. I actually know a friend of mine, उसको भी ड्रीम्स में आते हैं. Okay. Very weird लगता है क्योंकि I get dreams every day. And अगर मैं सारे दिन बैठ के मेरा ड्रीम्स लिख के किसी को दूँ या फिर मूवी बनाऊँ तो एक्चुअली मूवी भी बन सकती है, like start to end. And I remember that also. Nice. Yeah, but मेरे को dreams like once in a 6 months, once in a 4 months, just like that. और वो भी एक ही बार आता है. So एक बार मैं सो जाती हूँ, then just सुबह ही उठती हूँ. It's just like that. Right. So yeah. So apart from Chota Bheem, because you're working for Chota Bheem, आपका favorite cartoon आप बोलोगे ही Chota Bheem, but apart from that, what's your favorite cartoon? Kitretsu. Kitretsu. Yeah. डोरेमोन क्यों पीछे? कितरेत्सु में साइंटिफिक चीजें उसमें ज्यादा है. लाइक वो इन्वेंशन करता है उसको, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो डोरेमोन से उसको अलग बनाती है, तभी वो इतना फेमस हुआ है. राइट. डोरेमोन भी है उसमें, नए न्यू गैजेट्स आते हैं. सो डोरेमोन एंड कितरेत्सु बोथ आर माय फेवरेट, बट इफ यू आस्क फॉर द लाइक द टॉप मोस्ट वन, देन इट विल बी कितरेत्सु फर्स्ट एंड देन द डोरेमोन सेकंड एंड शिनचैन थर्ड. Right, Shinchan. Right, perfect. So this is about your writing, right? Now I want to understand about your astrophotography. कहाँ से शुरू हुआ ये? Okay, so. And you're also a part of LIGO India. Okay, LIGO India, yeah, gravitational wave science communicator. मैं पढ़ा हूँ, I'll tell you. Camera के I'll tell. LIGO India. You're a part of LIGO India, and the full form is Laser Interferometer Gravitational Waves Observatory. Am I right? Yes. पढ़ा है मैंने 10 बार पढ़ा है मैंने, so I don't forget. Okay. So tell me about this, the journey. Okay, so I started my astronomy career in 2019. Okay. So like I I was in the first year of How does graduation. someone study for astronomy? How how do you study for astronomy? मतलब क्या क्या करना पड़ता है? Like 10th के बाद क्या, उसके बाद क्या? ओके, 10th के बाद आपको सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो सॉरी 10th तक, एंड 10th के बाद यू हैव टू टेक साइंस फॉर दैट, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू टेक PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विद एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स विद CS. बट CS कंप्यूटर साइंस. या सो बट मेरे लिए मेरे स्कूल में क्या था, मैथ्स विद बायो. Okay. So I was a student of physics and bio both, so I can go to the medical field and I can go to the non-medical field. Right. So it is my choice. Understood. So after that, because मेरे को astronomy का craze था since I was in like since childhood. So I used to watch the Discovery Kids and the Discovery Science. My father used to watch that, and वो मेरे को बुलाते थे कि यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है which is about astronomy, so you should make the notes on that. So वो बुलाते थे and then मैं कॉपी पेन लेके आती थी और वो फैक्ट्स नोट करती थी. So वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ and then I took science just for astronomy. एंड देन 11th-12th के बाद आई वाज लाइक कि मुझे बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी थी, बट आई एम ग्लैड कि मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा एडमिशन हुआ था लाइक चेन्नई में. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, सो बट इट गॉट कैंसल्ड ड्यू टू सम इशू. सो उसके बाद आई वाज लाइक कि प्राइवेट कॉलेज में मेरे पेरेंट्स एंड बाकी घर वाले नहीं चाहते थे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो. सो आई वाज लाइक कि ठीक है, जब बात वो है ना कि अगर ये सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है. सो ठीक है, आई टुक अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड देन आई स्टडीड BSc इन मेजर फिजिक्स फॉर एस्ट्रोनॉमी, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी के लिए आपके मतलब आपके ग्रेड में कोई प्रोग्राम नहीं है, सब कुछ मास्टर्स में है, मास्टर्स एंड देन PhD. सो यू हैव टू डू योर बैचलर्स इन फिजिक्स for doing masters in astronomy and PhD in astronomy. So I did a bachelor's in physics, and then when I was in first year of my graduation, so I did internship in experimental physics, which is about astronomy.
Wow. So in 2019. So that was the first time when I was experiencing such kind of thing and telescopic thing. New things, Yeah, right. observational astronomy. Right. So that was the first time. So I started my career there. The internship was just about 5 to 6 months, and it took me like 9 months. 8 to 9 months. I extended a lot because I was so enjoying the internship, and that is all about the I become a educator head of the for the city. Okay. So entire city के लिए educator head बनी and science communication भी वहीं से सीखा. Right. So and after that, What is science communication for the viewers? science communication where you I'm telling you something like the question. So how will you explain in a very simplest way Right. to the kids? Okay. So science communication is all about how you are explaining down that breaking down the complex complex concept into the simple things. layman language. Yeah, layman Right. language. Right. Yeah. So I did वहीं से मैंने अपना science communication skills explore किया कि I can do this thing also. So उसके बाद then COVID आ गया 2020 पे, and then after that I took a उस टाइम पे LIGO India का first program चला था for the gravitational wave science communicator. Correct. So it happened in 2020, right? it happens in 2020. Yeah. Right. So वहाँ पे मैंने वो प्रोग्राम किया. That was the first and last program. After that they never released any such programs. So वहाँ पे वो प्रोग्राम किया, and after that they sent me goodies and all from the IUCA and from the LIGO and from the TIFR also. So वहाँ से फिर tag मिला कि now you are a gravitational wave G-wave science communicator. Right. So I was like, hey, I was so happy, so I can use the tag at least because I did my entire program from the LIGO India. Right. So after that, We have LIGO, the program. I think there are 3 observatories, 2 in US and 1 in India. Maharashtra. Is it ready yet, or is it still I guess it is gonna be ready. I guess this year? Probably. I don't know exactly because it's been long कि मैंने ये news Correct. सुना हो. हाँ, so it's gonna be ready soon, I guess. Right. So after that, उनके कैलेंडर में मेरी एस्ट्रोफोटोग्राफी इमेजेस भी है in 2021 फर्स्ट ईयर में. सो दे आर दैट टाइम वो कैलेंडर बना रहे थे. इनमें उन्होंने एक प्रोग्राम वापस से एक कॉन्टेस्ट रखा था कि इंडिया के बेस्ट फोटोग्राफर्स की इमेजेस वो अपने कैलेंडर पे इस साल लगाने वाला है. सो आई टुक द पार्ट इन द कॉन्टेस्ट एंड दे सिलेक्टेड वन ऑफ द इमेजेस ऑफ द सैटर्न कि फिर वो कैलेंडर पे आई, एंड लिटरली दे सेंड मी द कैलेंडर 2021 आफ्टर प्रिंटिंग एंड ऑल. सो आफ्टर दैट I joined 2020. I started my career, professional career in job. My first job I started in 2021. Okay. So that was about the astronomy trainee. Okay. Yeah. So 2021. Okay. So I selected as an astronomy trainee. Okay. So that was the first job in my career, and there was so hard days that time. मैं जैसे ही ज्वाइन किया, so company was a startup. सो इंडिया में क्या चीज़ है कि ये सारे एस्ट्रोनॉमी के सब स्टार्टअप ही हैं. तो कोई भी इतनी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी नहीं है. जो भी है वो हार्डली 1 or 2 है. Right. तो अब इंडिया में जो भी है सब स्टार्टअप है. तो आई टुक द चांस कि इट्स अबाउट एस्ट्रोनॉमी एंड इट्स एन एस्ट्रोनॉमी कंपनी, सो आई शुड गो देयर. सो आई शिफ्टेड इन हैदराबाद. सो that time what happened when I joined, I got my first salary after 1 year. Okay. And till 10 months I didn't get the salary. So we did work for the company for free for an entire year just because my passion, just because my dedication towards astronomy. So there I learned everything. My astrophotography, we are working till morning 9 to 7 p.m. and then in the what was the company about? What exactly were you doing? The company, what exactly? I was an astronomy trainee. No, I understood, but Yeah. what was the startup company? Okay, startup was about that was India's first leading organization who उनका जो सपना था वो टेलीस्कोप बिल्ड करना था इंडिया के अपने ब्रांड. Okay. Yeah. So that was a startup. So अभी वहाँ पे first salary मिली, I guess second भी मिली, but उसके बाद company started facing some issues, some financial crisis there. So that's why they couldn't make it.
तो सैलरी भी नहीं मिल रही, सो वी आर वेटिंग कीप ऑन वेटिंग कि अब आएगी सैलरी, अब आएगी. सो ऐसे 10 months चले गए. सो 10 months में ओनली जो भी एस्ट्रोनॉमी डेडिकेटेड पर्सन थे, ओनली आई गेस 3 to 4 people were there in the company at last. Right. After 10 months. So in 10 months में I have learned everything, every single thing about astronomy, every single thing about astrophotography, and I got a chance to ये telescope पे work करने का, observational astronomy. So I learned everything from there. Wow. Yeah, like because 9 to 7 जॉब के बाद हम लोगों के पास like we are a night person because astrophotography is night में ही होती है. So after 12 a.m. after 1 a.m. we again wake up and we started doing photography till the sunrise, till the dawn. So like we the journey quite like this. That was so adventurous because first of all कि हमको salary ही नहीं मिली थी, and I guess no one will work without salary for 10 months in the company, right? So it was my just passion and dedication कि वहाँ पे रुके हुए थे till 10 months, and in 10 months में घर से मैंने I don't think so कि मैंने कुछ भी लिया होगा in 10 months में. How did you survive then without salary? Because I was living in the office premises. Oh, अच्छा, okay. Yeah, office premises में. So they are providing everything in the office. Okay. So there was a dorm, one dorm, and there was a kitchen also. Okay. So we are just making the food and just sleeping there. So that was the thing. कि at least you must have all been like a family then. 9 months, 10 months, सब family. No, only 2 people were there. Oh. बाकी सब हैदराबाद से थे ना. Only with 2 people. अच्छा, you used to stay बाकी everyone they used to go back. Yeah. So भी 10 months का we have survived there. और ऊपर से फिर थर्ड वेव भी आ गया कोविड का. सो आई शिफ्टेड इन द ऑफिस इन द थर्ड वेव बिकॉज हॉस्टल में रहना बहुत रिस्की था. सो आई शिफ्टेड इन completely in office, and then I started. I was like since then I shifted in the office, it's like salary बंद हो गई. What is going on? So after that कि 10 months बीत गए. And पूरा ईयर हो गया. 2022 की अप्रैल में इट वाज ऑलमोस्ट पूरा ईयर ही था, नॉट ऑलमोस्ट. तो पूरा ईयर कि अभी सैलरी भी नहीं है, और घर 1 साल के बाद मैं घर जा रही थी, और घर पे भी सिर्फ पापा को पता था और आई गेस मम्मी को पता था, और किसी को कुछ नहीं पता था इस बारे में कि आपको सैलरी नहीं मिल रही है. सो आई गेस नो वन विल वर्क without salary for 10 months. How will you survive? So वो तो है कि मैं ऑफिस में थी, that's why I survived. Otherwise I don't think so that I could survive that so much जो crisis चल रहे थे कंपनी के. So I have learned everything there, and I was like कि एक काम करते हैं कि अभी क्योंकि हमको उसको कवर अप करना था, नॉट जस्ट कवर अप, हमको इससे ओवरकम करना था अपने माइंड को. बिकॉज 10 months में आप एक डिप्रेशन में चले जाते हो कि यार सैलरी भी नहीं मिल रही है, स्टिल यू आर वर्किंग. या सो उस स्ट्रेस से निकलने के लिए so I just took it. My father gave me suggestion, just take it little lightly कि तुमने 1 year का internship किया है, and where you have learned a lot of thing, and you gain knowledge, you you enhance your skills there. Right. You explore yourself, and you did everything, and you are just doing an internship. Just think like that, because if salary is gone, it's gone. It is not gonna come back. So I've actually seen the pictures that you've taken of Saturn. Yeah. Jupiter. And the shadow of the moon, also Jupiter's moon. Yeah. But I want to understand how. Just explain me, because you're a science communicator and I do not know much about science. So please tell me how you actually take these pictures. What is the whole process? Okay, so first we go out with the telescope, right? So हम telescope को set करते हैं. Do you have a telescope for yourself? Yeah. So telescope को set करते हैं, and we just point to the आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिखना है हम उस पर पॉइंट करते हैं. तो पॉइंट करने के बाद इफ इट्स विजिबल विद योर नेकेड आइज, देन वी स्टार्टेड कनेक्टिंग द कैमरा. सो देयर इज अ एस्ट्रोनॉमी डेडिकेटेड कैमरा स्पेशली. सो दैट इज MC Pro, आई गेस ZW MC Pro. सो वो कैमरा इट इज स्पेशली डेडिकेटेड टू एस्ट्रोनॉमी. सो हम उसको कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से, एंड देन लैपटॉप से वी स्टार्टेड देयर आर सम एप्स जिससे वो कनेक्ट होता है एंड लाइव व्यू आता है. सो हम उससे कनेक्ट करके लाइव व्यू देखते हैं, and then we started recording the video, and then we will process it.
Right. Yeah, we will process So the what data. exactly do you mean when you say you process it? Process it. We have to take out the real picture from the video. Okay. So when we shoot the video, we have to stack it for stability, and then we have to enhance its visibility. Okay. So after that, you will get the true color of the picture. So it takes like 2 to 3 years to process one image. So it's a long process actually, Right. and it's like not hectic, but it's long procedure. Right. And so you have to wait. You have to be patience for getting the good इतना patience image. आता कहाँ से? Like how are you so patient? Because I believe that there are certain professions in our life, Yeah. I mean in the world, which requires patience. So how did you get this much patience? I am impatient very much. I can't sit. You can ask my Over brother. time, I guess we learn things, right? So I guess over time, patience आ जाता है. And after living in, after staying in a company for so long, like salary के लिए इतना patience आए 1-2 months, so I guess it's like buy one get one free thing. So salary नहीं मिले, उसका patience वो develop होता गया है, and then I guess this is all started from there only. Right. Yeah. Right. So what has been the toughest picture that you have ever taken till date? Toughest picture, Uranus, because it's not visible with the naked Right. eyes now, so even you can't spot it. So it's very difficult to spot in the city areas and the other you have to know the exact location to spot the Uranus and Neptune. So we have successfully spotted in the morning 4 a.m. Like after struggling for I guess 1.5 or 2 hours for just spotting. Like we are just hunting where the Uranus is. So after successfully spotting, we took the pictures of Uranus and Neptune. After that, my outer solar system is completed. After Uranus and Neptune. Right. And Pluto is not there anymore Yeah. as a planet. But did you ever try to see Pluto? Pluto is a dwarf planet, no. But And I it's mean, so did you ever try? far. It's very It's so far, far. Yeah, you can't even see. It's so far. Wow. Yeah, wow. that So was the what is toughest this? picture. So what is this one big takeaway? Like you are an astrophotographer, you see things. We are human beings, but then you see things which are like millions and millions light years Light away years from us. away, yeah. So after seeing everything, this life and that life, and you know that things were bigger than us, what is your biggest takeaway? I'm not getting your question. नहीं मेरा मतलब है कि अभी you know human beings, you know us all, like I mean you know how we are living living on Earth, right? But at the same time you also have seen stars, you've also seen planets which are like some millions of light years far from us, right? And when you actually look at them and look at us, you also understand that we are just a small speck of dust in this entire big universe. So was there any way that it might have changed your perspective towards life? Towards life, that हाँ. life, कि पर ऐसा लगता है कि यार हम तो बहुत छोटे हैं, मतलब there are lots of things, Then anything yeah, that might have हमसे भी changed छोटे- your हम- perspective. हमसे भी छोटे particles हैं, right? Right. That we call quantum world. Right. Okay, so अभी अगर आप एस्ट्रोनॉमी से और लाइफ को कंपेयर करोगे, then you will enjoy it. कि अगर because people are just roaming around with the sad thing, with the like either they are so happy, either they are so sad, either they are like they're stressed out. So if you tell them that okay, let's do something interesting. So if you just tell them to dedicate your life to the astronomy, and we will see the craziest thing in the world. So I guess it will change their perspective of living a life. Because that's what I believe. Right. Because it changed my perspective too after Correct. getting into the astronomy. Right. Wow. Yeah. Great. So now we'll get into your personal life, since you have spoken much about your professional. Yeah. So tell me now, how's love has been to you? Because love is by far one of the most purest emotion, I would say, other than revenge. So I want to understand how's love for you, how has love been for you all these years? I don't think so that I can answer this question, because love is like the toughest thing, I guess. Tougher than your Uranus and Neptune, Pluto. Yeah. Okay. Not that much tough, but it's like it's all about understanding the person. Okay, completely understand. Like you have to understand the person opposite to you. So once you understand them, life becomes easy. But
but you have to make the efforts till you understand them. So I guess it's all about the understanding, and if you have a good understanding, the relationship will be good. Since you spoke about relationship, I want to understand what are the 3 important things that you think should be there in a relationship? Respect, understanding, and love. Perfect. I also actually tell my friends that there are relationships which do not have love but have respect. But there are no relationship ever in this world that has existed If love with is love not but without respect. See, love. If you have respect, it's okay. Everyone has respect towards towards you or towards me. Right. Yeah. So, but if there is no love, then I don't think so It's that more like a relationship will exist, because a friend has respect to other friend, right? They have respect for everyone, but they can't love, na. So they are not getting into the relationship because they don't love each other. Correct. Right? They can't spend their life without love. So I guess love is the topmost priority. Trips going on. How's everything with friends? Friends, I don't think so because friend तो छूट गए 12th के बाद. So only one friend is there, like my best friend. So उससे बात होती है but 3 to 4 months. Okay. Like once in 3 to 4 months because she's so busy with her things. Yeah. So apart from that, all the colleagues are there. Right. So what's next for you? आगे क्या? From now on, what are you looking up to for life? What do you want? Okay, so currently I'm doing my masters in geoinformatics. In? Geoinformatics. Geoinformatics, that means about geography and... geography of Earth. Right. GIS. So I'm doing my geoinformatics, like masters. After that, I'll try that if I get chance to explore the field. So I'll definitely try, because my only hobbies, like 3 hobbies are there. The painting, I'm an artist, so painting, astronomy and writing. Right. So I want to explore all these things. So I have explored astronomy. Did you ever wanted to go to ISRO, join ISRO anytime by any chance? Actually, ISRO is not doing astronomy. It's all about rocket science. Yeah. So there's no place for people like you there? Astrophotographers? No, I don't think so. They have place because they all want engineers in there for building rockets, for building satellites. So कभी मेरा ISRO जाने का ऐसा कोई dream नहीं था. No, but I asked this question because ISRO is something, an institution that is looked upon by the world. But it is all about the rocket science and like satellites, rockets. Correct. So I don't think so कि if you have done your masters or until you are done with your PhD, they won't hire you for that as an astronomer. The astronomers are there, but you have to do your PhD first. Right. Any ideas to do PhD? Do you have things? For me, like I'm not planning for my PhD. I'm just planning for my masters, and after that I'll try to explore this field as well. If not, then I'm good with my writing because writing is like I'm enjoying a lot. I just want to understand, how did you start writing शायरी? छोटा भी I understand, but how did शायरी come to you? And if at all possible, can you read a शायरी right now? Yeah. Okay, go on. Please. Okay. तो एक मैंने शायरी लिखी थी, दैट इज ऑल लव के ऊपर. तो वो थी, इश्क ने इश्क को इश्क से इश्क करना सिखाया, यूं बेहिसाब इश्क ने उसको सब इश्क सिखाया, जब बात आई उसके इश्क पे तो उसने इश्क को ठुकराया, इश्क से उसको इश्क लड़ाने वाले ने जब उसको इश्क का पाठ पढ़ाया. टंग ट्विस्टर है ये. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इट्स लाइक कि इश्क ने इश्क को इश्क से, लव ने लव हैज टॉट लव इन अ लवली वे. how to love themselves or how to love yourself. Right. So इश्क ने इश्क को इश्क से इश्क करना सिखाया, अब यूं बेहिसाब इश्क ने उसको सब इश्क सिखाया. अब यूं बेहिसाब इश्क ने means कि without any expectations, without anything, without limitless. बेहिसाब basically infinite. उसके पास बहुत infinite love है and he's he just gave everything. He was giving. तो बेहिसाब इश्क ने उसको सब इश्क सिखाया, लेकिन जब बात आई उसके इश्क पे, जो लव सिखा रहे हैं उसी का जो इश्क है, उसी का जो
लव है, जब उसने इश्क को ठुकराया, अब जब उसको सिखा रहे तो ऑब्वियसली उसको प्यार हो जाएगा, तो जब उसने सामने वाले ने ही मना कर दिया जो उसको लव सिखा रहा है, तो दैट इज ऑल अबाउट दैट। इश्क ने इश्क को इश्क से इश्क करना सिखाया, यूं बेहिसाब इश्क ने उसको सब इश्क सिखाया, जब बात आई उसके इश्क पे तो उसने इश्क को ठुकराया, इश्क से इश्क लड़ाने वाले ने जब उसको इश्क का पाठ पढ़ाया। इश्क से इश्क पढ़ाने वाला मतलब जो पढ़ा रहा है और जो सीख रहा है। राइट ये बहुत हो रहा है आजकल। मुझे रोना आ रहा है, ट्रॉमेटाइज हो रहा हूँ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को लेके। बट दैट नहीं, मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। आई हैव नेवर बीन इन लव, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ऑन कैमरा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बट देन लव इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। Yeah, for many people it's complicated. Like love is complicated, but it's. Why do you think शायरी जो है, आपको क्यों लगता है कि शायरी में, जितना भी मैं शायरी पढ़ा हूँ आज तक, ज़्यादातर इश्क मोहब्बत, लाइक ऑन दिस टॉपिक, इतने सारे एक ही टॉपिक पे क्यों है? क्योंकि आजकल ब्रेकअप भी इतने ही हो रहे हैं ना। हर दूसरे हर 5 में से 3 बंदों का दिल तो टूट ही रहा है, बंदों या बंदियों का दिल, लड़का लड़की का दिल टूट ही रहा है। शायरी वहीं से आता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, शायरी आपका कहीं से भी आ सकती है। इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस, राइट? एक्सपीरियंस सिर्फ आपका लव में नहीं होता, एक्सपीरियंस आपका हर चीज में होता है। लाइक मेरा एक्सपीरियंस मेरी फर्स्ट जॉब के साथ कैसा रहा था, तो मैंने उसके पॉइंट में भी आई गेस बहुत सारी पोएट्री लिखी थी शायद तब, तो वहां से भी आती है। तो एक्सपीरियंस डिफरेंट चीजों में होता है, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लव। सब शायरी किसी भी तरीके से लिख सकते हो। परफेक्ट। आप कहाँ से, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट राइटिंग शायरी? I started my poetry thing when I was in 7th standard. Okay. So वहाँ से मैंने फर्स्ट पोएट्री लिखी थी सचिन तेंदुलकर के ऊपर, क्योंकि उस टाइम वो रिटायरमेंट ले रहे थे। Right. So उनके ऊपर लिखा था। After that I was crying, by the way. I just want to tell you, when Sachin took retirement, I was crying. Okay. Yeah, I cried a lot. आप उनकी पोएट्री पढ़ सकते थे। That was so like जो भी फील किया था वो उस टाइम पे लिखा था। So my brother helped in this poetry because he knows Sachin Tendulkar very well. Okay. तो मतलब वो उनका बहुत बड़ा फैन था, तो उसने मेरे को चीज़ें बताई कि उसको इसका शौक था, सो मैंने पोएट्री बना दी उसके ऊपर। एंड दैट वाज द फर्स्ट पोएट्री जो हमारे स्कूल मैगजीन में आई थी। Wow. And after that I started this like in every instance when I'm like feeling sad, when I'm happy. Yeah. So like people ऐसे होते हैं ना कि जो लोगों को बताना पसंद नहीं करते हैं, वो अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट दे कैन एक्सप्रेस थ्रू द पोएट्री। Right. So poetry has like this strong existence. So like all upon these things. Right. So I guess वहीं से मेरा राइटिंग करियर स्टार्ट हुआ था एंड पोएट्री थिंग स्टार्ट हुई थी। आफ्टर दैट, आफ्टर 10th, 11th, 12th, I started doing it like slowly. But when I started my college life, then it was the peak of the mountain. It was like continuously. Right. Yeah. And I've seen your videos. You recited. You had 2 different open mics, I'm sure. Yeah. Right. So I like in 2019, like before COVID. Right. So I was very much active in the open mics when I was in Delhi. So after I shifted here, it's very less because I can't see people in the open mic and like such thing happen in Hyderabad. No, it's there. I'll tell you. I'll let you know. It's actually there. You would love to go there. So from there, this, right? Yeah. Okay. So it took me 4 years. I started in It is COVID. Kritansh. Kritansh. What was your? I mean, Krit. I understand that's your name. Kriti. Yeah. Ansh What is means Ansh? your Part. Okay. Your Yeah. part. So Krit means creativity. Ansh is a part. Okay. So the Kritansh means it is a part of my creativity. Okay. So that's why I named it Kritansh. Wow. Yeah. So क्या पढ़ने को मिलेगा इसके अंदर? Like what did you write about? It's a mixed up genre. Like everything, like poetry आपके देशभक्ति से लेकर के आपके प्रेम तक, और like every type of genre will be there. Wow. Yeah. So even the politics भी इसमें है, politics के ऊपर poetry भी लिखी थी, and हिंदी के ऊपर भी लिखा था. So भावना, अनुशासन. This is my second book. Okay, your first book is, I'll tell you the name. एक सच, wait. गूंज एक सच. So वो book किसके ऊपर था? वो book social work के ऊपर था. It's not about the social work. तो मैं कोविड टाइम में काफ़ी हाईली एक्टिव थी, उसके बाद भी बहुत एक्टिव थी, उससे पहले भी बहुत एक्टिव थी. लाइक सोशल वर्क आई वाज डूइंग सिंस आई वाज इन 11th standard. Right. So
जब मैं लोगों से मिलती थी, जब हम लोग जाते थे उनसे बात करने, सो वो हमको अपनी स्टोरीज बताते थे कि कैसे वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट नहीं सुन रही है और गवर्नमेंट ने ये किया, ये हमारे लिए इतना कर रही है, इतना ले रही है हमसे और हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। वहाँ पे बहुत लोगों के उस टाइम एक्सीडेंट हुए थे, डेथ्स हुई थी उनके घर में, सो दे आर नॉट इवन लिसनिंग। सो ये उन सब की आवाज़ें हैं जो मैंने अपने शब्दों में बयां की है उस बुक में। Wow. with poetry even first, like it's type a story book कि first a chapter पूरी story उनकी and then एक poetry उस genre के ऊपर, उसके ऊपर। Right. Where can I find the book? I read. Yeah, on Amazon. Yeah, Right. you will find it on Amazon. I want to read it. Yeah, sure, definitely. It's in Hindi? Yeah, it's in Hindi. Wow. Wow. Yeah. So how was this your is experience? Yeah, I know Yeah, this is in Hindi. yeah, So yeah. how was your experience first, like when you were actually publishing the book? Who motivated you to publish, and then how did that all happen? How was your experience? Actually, first book I published by myself because that time कि I was writing, so I guess some of my friend told me you should get it published, but I was like, this is just a story book, 50 to 60 pages, so I can't even publish such less pages. So he was like कि it's not all about pages, it's about कि आपके उसमें emotion क्या है, आपका experience क्या है. So I was like, okay, I guess I should publish it. Then I started editing the book. I started watching videos. How can I publish the book? So first I published my book on Amazon Kindle. Okay. So I published it myself only. Okay. Then after one publisher came to me and he said कि you should publish it through us. I said I asked them कि why is I have already published? So they are like it's available on Amazon Kindle ना, it's not available like paperback edition. It's not available in that. So I was like okay. Then they published it for free. Okay. Yeah, because they liked my book. Okay. So they published it, and after that, after just 1 month. So after that I started working on my second book. It was my dream to publish my book Kritansh with the name Kritansh one day. Okay. So it's just like my dream comes true. दिखाएंगे ना इसके part 1 part 2 आएगा ना. This is part 1 hopefully. I won't Actually I'm currently working on my third book, Okay. which is a novel. Wow. Moreover, so I'm not thinking about the poetry one more because there are many people who can't read Hindi in Hyderabad. So I was like, okay, let's write a novel then. Okay. So and you're writing this in English? Yeah. Wow. Yeah. So my another book will be in English. Genre क्या है? If I can. Genre. Right now I just thought कि it's about the book of my dreams. Wow. So हमारे माइंड में 1 minute में 40,000 thoughts आते हैं almost. So 40,000 thoughts में से we can't even remember like more. We just remember 2 or 3 thoughts. और बाकी सब thought तो कहाँ जाते कुछ नहीं पता. So अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो उसके बाद instantly thought change हो जाता है और हम अपने दिमाग में कहानी बनाने लगते हैं कि काश ऐसा नहीं ऐसा होता, ऐसा नहीं ऐसा होता. तो it's just all about that. It's a psychology, yeah, what will you say in your language. So it's all about that. So that's why I just named it the book of my dreams. Wow. जल्दी आप कर लीजिए. I want to read it. Till my master's gets finished, I guess I will publish this book. Right. When is your master's going to complete? 2026. 6 तक. ठीक है. उससे पहले ही हो जाएगी. It's okay. So I mean, great things take time. So yeah, because it will be like 200-300 pages now. So I guess it will take time to build stories. Wow. So I have to shift my concentration. I have to shift my focus from Chhota Bheem to writing because it's very tough to shift focus now. Right. Yeah. I mean, I understand writer's block. I mean, you have to be there, and sometimes you can't write, which is writer's block. Sometimes you just can't. Because अगर कभी-कभी माइंड में पूरा चलता रहता है कि अरे यार स्टोरी सबमिट करनी है, what should I do? आपका राइटिंग का प्रोसेस क्या है? Like how do you write? Like do you erase? How do you exactly do? जैसे आप बैठते हो कैसे स्टार्ट करते हो लिखना? ओके इधर लिखने से पहले मैं जॉनर देखती हूँ लाइक कि ओके मेरे को इसके ऊपर लिखना है एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग द सिमिलर थिंग्स. सपोज इफ अ जॉनर इज अबाउट द डीमन, ओके सो आई विल वॉच द थिंग्स अबाउट द डीमन. अभी रिसेंटली जो कोई भी मूवी आई है, वेब सीरीज आई है, उसमें कैसे स्टोरी है, उसमें क्या क्या है. सो आई टेक माई आइडियाज. आप मूवीज देखते हो ज़्यादा? नॉट ज़्यादा. जस्ट तभी देखती हूँ जब मेरे को कुछ आइडियाज चाहिए होते हैं. सो व्हेन आई वांट आइडियाज आई विल जस्ट स्टार्ट वॉचिंग मूवीज. सो अगर कोई डिफरेंट आइडिया मेरे को मिलता है
तो I'll start with the idea कि हम इस स्टोरी में उस आइडिया को कैसे मोल्ड कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. सो बिकॉज हम लोगों को आइडिया तो कहीं ना कहीं से चाहिए, वेदर यू बिल्ड इट और यू विल गेट आफ्टर. जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं तो हमको डिस्कस करते करते कोई आइडिया क्लिक हो गया, so we'll just immediately start writing the idea before we forget it. So हम लोग देखने से ज़्यादा आपको मेरे सपने में श्रेया को भेजूंगा, लास्ट श्रेया टू सेंड इट टू यू. आप देख लो, अगर कोई स्टोरी बना सकते हो तो बना लो. बट डेली आते हैं मुझे बहुत. इवन इफ आई स्लीप फॉर एन आवर आई गेट अ ड्रीम. आई डू गेट अ ड्रीम. आई डोंट नो व्हाई बट आई डू. Maybe it will help with some ideas. I know. I'll text कर दूंगा आपको. Yeah, definitely. So like when I sit on my chair in the morning, so I just think about like, okay, this is the genre and how will I build a story. So I started watching related the things. If I get some good idea and how we can present it and how we can, because we can't take the exact idea. Right, because it's already published, it's already. So उसके बाद just हमारा जो माइंड होता है, या तो अभी माइंड में वो आइडिया फिट हो गया तो अभी आपको उसको एक्सपैंड करना है until you reach your limit और until like जब तक आप उसको पूरा एक्सपेंड कर सकते हो स्टोरी में, कैसे उसको आइडिया को डाल सकते हो. सो इट्स द टफेस्ट टास्क. सो पूरा दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में निकलता है, पूरा दिन लाइक जस्ट हमको ब्रेन के ऊपर ही पूरा फोर्स डालना पड़ता है कि अभी क्या आइडिया रखे, क्या लेके आए. सो इट्स ऑल अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो वंस यू गेट दी लाइक डिस्कशन से भी बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो. सो वी गेट द आइडिया इमीडिएटली एंड वी जस्ट राइट इट ऑन द पेपर एंड वी जस्ट स्टार्ट पुटिंग इन द स्टोरी कि स्टोरी में कैसे फिट करना है ये आइडिया. सो पूरी स्टोरी वी हैव टू बिल्ड इट. Right. Yeah, it's just like that. Once it's completed, then we will send it. Right. And since you're a poet and an author, I just want to ask you this. What do you think is the most beautiful thing about life? Most beautiful thing. Okay, so most beautiful thing is about the exploring. Exploring part. Because I'm a traveler as well. So I love traveling. So I would like कि life is all about exploring the things. Right. So because you have got a one life now, so one life you can't be like completely in a trauma. You can't be in dilemma कि अरे यार अभी क्या करें, sad हो गए या बहुत ज़्यादा happy हो. So you have got a one life, so I guess you should enjoy yourself. You should try exploring the other things as well. Right. So this is the most beautiful part, exploring. Right. And what's your biggest dream, biggest goal from your life? Like, what do you want to achieve? I want to achieve. Okay, so I want to be a researcher to to discover something. Yeah, but recently I have discovered an asteroid as well. Really? Yeah, I discovered an asteroid. It will be on, I guess, NASA's website on the discovery about the asteroid. Please send it to me. If at all I'm publishing this particular reel, I'd want to show it in the video. I have the certificate of that. Okay. That we you can have. share it with Shreya. Yeah, definitely. So how do you discover a asteroid? Yeah, so there is a competition होता है जिसमें NASA पार्टनरशिप करती है पेन स्टार्स का, जिसमें एस्ट्रॉइड हंटिंग होती है. So they will send you the data, okay, on a particular app. तो वो आपको ऐप का पूरा सिस्टम भी सिखाएंगे, क्योंकि वो पूरी की पूरी ऐप उनकी ही होती है जिसके ऊपर ही आपको डेटा का मतलब डेटा प्रोसेस करना पड़ता है, डेटा एनालिसिस करना पड़ता है. सो यू हैव टू डू दे विल सेंड यू द टेलीस्कोपिक डेटा, द रॉ डेटा, एंड यू हैव टू एनालाइज द डेटा. So if the data you analyzed it is correct and it's an asteroid, then it will goes to the NASA's website that the recently discovering asteroid. So your biggest dream is to actually discover something like this? Yeah. So I guess one thing is done. So I'll do more in the future. Right. Hopefully. Yeah. With this question, we end our podcast. It was great talking to you, but before we leave, we'll play a small game. Yeah. Right? So basically what I do is whenever I call my guest, I play a small game, whichever is very small. It can be rock, paper, scissors or just staring game, something like that. Okay. Whoever loses the game, they have to perform a philanthropic dare. Okay, right. What is it about? So let's say it can be anything, philanthropy, whatever you have done, social work. Okay. Right. I mean, there are certain dates I've written here already. The team has written here already. I don't know what's written there. So we'll play a game, and whoever loses, they have to choose from 1 to 4, any number from 1 to 4. Okay. And let's say you say 3, whichever is written there, you have to perform that.
So it's a philanthropic dare, as in social work kind of thing. So that's how we are bringing impact. Oh, I got मतलब it, social got work it. related, Yeah, मतलब yeah, yeah. distribution Got of it. blankets हो जाए या फिर Then spending we will some do time it, in the yeah. government school. Yeah. And then once, let's say I lost, then I'd call you on the day that I'll be performing, and then we all will be together, and then we'll perform the dare. Okay. All right? Done. Yeah. So जो lose हो गया, they will perform the dare, but it would be great if you can accompany us. All right? Okay. Perfect. So we'll play the staring game because yesterday I played rock paper scissors. I'll play the staring game. So you'll have to look at me. I'll have to look at you. Okay. Whoever blinks first will lose the game. I hope your fiancé doesn't mind. फिर मारेंगे मुझे बाद में. Like, all right. Perfect. So shall we start? Yeah. Okay. So camera, we are performing the philanthropic dare game, and we would look at each other. Whoever blinks first would lose. For like कितने seconds? नहीं कितने whoever blinks first is going to lose. Okay. नहीं, I'm not a pro. ऐसा नहीं है कि मैं pro हूँ. It's just that we sat here and the only games that we can play is this. Okay, all right. Okay. Shall we start? Okay. So please judges, I want you both to be the judge. देख लो आप, फिर cheating नहीं करना बाद में. Okay, 3, 2, 1. Like not ready. All right. So she just lost, guys. It's like Just 1 millisecond. second. Yeah, 8 seconds. Shall we start again? Shall we start? Okay, fine. Round 2, just on the request because she's our guest. Okay, 3, 2, 1. 1. I hope. Right. See, be sportive. ठीक है, मुझे I lost. Okay, all right. It's okay. Kirti lost, and I'm sure that whatever the dare would come, it will be helpful for the people. So you actually did not lose. You will actually win performing the dare, I hope. So now I'll tell you any number from 1 to 4. 4. It says distribute blankets in old age homes. Okay. But it's summer time, na? Yeah. तो हम change करते हैं. Let's feed stray dogs. If that's okay with you. I'm afraid of dogs. Okay, let's donate food to children. Yeah. That's Okay. it. So we would be performing the dare, which is donating food to underprivileged children. Yeah. Not now, obviously. Whenever you're free, whenever we are all free, we will schedule a date. We'll let you know. The team basically does everything for you. You don't have to worry. We'll take care of. I've been doing the same thing near my home. Perfect. In Perfect. Gachibowli. Perfect. Yeah. So it's up to you if you want to. I mean, if at all you're free, you can let us know that you want to do that dare on that particular day. आप मुझे बुलाएं and I can come there. We'll just make a small vlog kind of a thing, and that's it. All right? Yeah. Any day you can do. Yeah. Perfect. Perfect. So it was great talking to you. I really love the conversation. How did you like the conversation? Yeah, it's absolutely good and amazing conversation. Right. Yeah. And I'm actually looking forward to read the book. Your first book as well as your third book whenever it releases. Please let me know whenever it releases. Definitely. Sure. Perfect. Thank you again. Thanks for being on my podcast. Thanks a lot.